हेलो दोस्तों, होपफुली आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। सो आज देयर आर सम क्वेरीज ऑन आवर एनालिसिस बोथ प्री मार्केट क्या था एंड देन आल्सो ड्यूरिंग मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द टू लेवल्स। आई थिंक ये बेसिस काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था। बेसिस ये दो आपने जो देखा होगा, हमने एक प्री मार्केट दिया था कि 250 300 रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सो वहाँ से वी कैन सी ए बाउंस एंड देन अराउंड 11 o'clock 11:15 हमने दिया था कि this is close to seeing base, so we can see a bounce of as such. Okay, both these reactions happened beautifully. Now the question is ये analysis कैसे और क्या हुआ था. So no rocket science, we'll quickly explain कि हमने इसको कैसे एनालाइज किया था. ओके, सो पहले हम देखेंगे कि मॉर्निंग प्लान जो हमारा था वो एनालिसिस कैसे था. ये आपका 5 मिनट चार्ट है. सो yesterday आप अगर देखेंगे वी हैड ए कंप्लीट ट्रेंड डे डाउन. We had a complete sort of trend day down. Okay, and then basis that there was a lot of volume accumulation at this zone, and then there was a volume accumulation at this zone. Okay, this zone, if you see a pullback failed here and then sort of it went down and again sort of also, so एक breakdown failure भी था और एक pullback failure भी था, right? So उस basis पे हमने इस zone को एक focus अपना zone लिया था कि ये प्राइस स्ट्रक्चर और जोन वाइज ये जोन बढ़िया बनता था कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो हम बुलिश देखेंगे, अगर यहाँ से नीचे होल्ड करता है तो हम बेयरिश देखेंगे. ठीक है, फिर जब मॉर्निंग में मार्केट खुला यहाँ पर अराउंड द सेम प्राइस लेवल, luckily for us खुला. Yes, luckily, because sometimes I love this gap up gap down or even flat openings, gap up gap down specifically, but this was not that, but we just got a sweet entry. इस अगर गैप डाउन होता था तो हमें रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता था. बट अगर आपके स्वीट स्पॉट पे खुला है वहाँ पर आप क्विकली रिएक्शन देखते तो आप ट्रेड एंट्री ले सकते हैं. हमने रिएक्शन क्या देखा वो हम आपको एक बार समझा देते हैं कि हमने यहाँ पर देखा था. ये आपका फर्स्ट कैंडल है बेसिकली. आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट कैंडल में there was a lot of positive delta, right? The candle was bearish. Why? Because if you see there is a 13k buying, 8k buying, 17k buying, 20k buying, lot of buy orders were stacked. but लेकिन फिर भी कैंडल bearish close हुआ, so that immediately showed कि एक pressure है यहाँ पर, absorption है market में, where buying is getting, so there are a lot of sell orders likely to यहाँ पर place था 200 250 पे, जो सारे बायर्स को ब्रेकआउट बायर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहे थे. ठीक है, वापस जब यहाँ आया फिर वही चीज़, वो 8k बाइंग 11k बाइंग, सो दैट absorption was happening. Okay, एंड देन इट गिव ए गुड कंफर्मेशन कि आपको डाउन साइड मूव मिल सकता है. इनिशियली एक्चुअली इमीडिएटली मिला भी था, विच हिट द आई थिंक काइंड ऑफ यस्टरडेज लो ऑफ डे के आसपास. तो एक ट्रेड वहीं इमीडिएटली आपको मिल गया था होगा. वो भी एक यस्टरडे का एक लेवल था जहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर सपोर्ट आया था. तो वहाँ वहाँ तक आपको इमीडिएटली एक ओपनिंग ट्रेड मिला था. ठीक है, एंड देन पुल बैक में वी गॉट अनदर शॉर्ट एंट्री. सो दैट वाज द रीजन फॉर आवर ओपनिंग ट्रेड एंट्री. ओके, नाउ आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स ग्रुप में कि मैं बोथ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम एक शॉर्ट टर्म फ्रेम में रखता हूँ और एनालिसिस के लिए हायर टाइम फ्रेम रखता हूँ. ठीक है, दिस इज द चार्ट आई शेड. नाउ द रीजन व्हाई वी सेड दिस वाज अ स्विंग बेस इज इफ यू सी यहाँ ये जो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आपने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट करके देयर वाज बाइंग, देयर वाज फेलियर एंड देयर वाज बाइंग अगेन, राइट? ठीक है, सो अराउंड लॉट ऑफ दिस जोन एंड दिस जोन लॉट ऑफ वॉल्यूम गॉट स्टैक्ड, मतलब यहाँ पर बहुत ही वॉल्यूम अच्छा आया था जहाँ से बायर्स एंगेज हुए थे, बायर्स एंट्री लिए थे. ठीक है, सो दिस हाई वॉल्यूम नोड आई वाज एक्सपेक्टिंग to be a bit of a support. Okay, along with price structure confluence, क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी सपोर्ट लेके आपका यहाँ से बाउंस किया था. ओके, and if you see, and that is a zone I had marked it essentially for our pullback play here. So market low किया उसी zone के ऊपर, and then once it gave a bit of a confirmation on order flow chart, we could take an entry there simply. If you see यहाँ पर order flow में आपको immediately अगर आप देखेंगे there was no really failed order, but despite a lot of selling, price was slowing down. और यहाँ पर एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पर actually selling हुआ, but candle was kind of a bullish candle, and then we had this candle which was sort of a bullish, and then this was again a bullish candle. So this became a little bit of a base to ensure that we get a pullback to view up. I was expecting a pullback to honestly view up and then probably some rotation, but then जब ये rotation fail हुआ and we started closing above, and this became a very good sign कि you know
यहाँ पर भी sellers are not getting very strong. If you see, they were very weak selling and then we pushed higher from here as well again. Okay, so ये हमारा दो levels था और ये दो analysis था. It's a combination of, as I said, intraday charts, your 30-minute profile charts, which is a bit of gives me a context on a larger time frame, and then of course order flow analysis. I think there's no rocket science again, guys. It is just simple analysis of price structure, and then confirmation of your execution with order flow. Okay, so no magic, nothing around it. Okay, it's a simple trading analysis. Hope this helps. और ये आपको जो पैटर्न है हमेशा अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चार्ट्स में दिखेगा. So that pattern is really helpful. Okay, another thing I probably want to talk about is I've also spoken about intermarket confluence in the past. अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था निफ्टी में, there was a breakdown. Okay, between nifty I was expecting this level to support. So when that breakdown happened, it looked like it will pull back, but then this was also pulled back into nifty's support zones of 100. Okay, into this. So it gave me a double confirmation that bank nifty can actually pull back, and both nifty can also pull back from here. Okay, the pullback I was expecting till this zone, which was basically again yesterday's price action zone. अगर आप देखेंगे हमारा मॉर्निंग में भी निफ्टी में भी यही प्लान था, यहाँ का सपोर्ट हम यहाँ का रेजिस्टेंस देख रहे थे, वहीं से सेल ऑफ आया था एंड वी एक्सपेक्टेड अ पुल बैक टू दिस व्हिच हैपेंड ब्रिलियंटली इन निफ्टी. ठीक है गाइस, थैंक यू, होप दिस एनालिसिस हेल्प्ड.